बंद कर दे। Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं तो कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। इस पर आप कस्टम प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं और सब कंपनी फाइनेंशियल्स एक ही जगह। Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. यह है इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। Good evening to all. अलर्ट सेट कर सकते हैं, सारे कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं। So we was discussing about the jurisprudence, and today we will discuss the another part. We'll see the another part, and that is nothing but the important definitions under the AV Act. So we have already seen the different schedules and particulars to be shown on the labels. Now next part is nothing but the again important points, like first one is the ethics and morals to the pharmacist. So ethics and morals to the pharmacist, from that there is one chapter, you know, that pharmaceutical ethics. So laws means what? Laws is a compulsion to do that, otherwise you will get punished. If you break the law you will get punished. Suppose आपने अगर बिना लाइसेंस के ही मेडिकल डाल दिया, या फिर आपने बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही आप वहाँ पे डिस्पेंसिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली वो एक गुनाह है, दैट इज अ पनिशेबल एंड यू विल गेट पनिशमेंट, यू विल गेट अ फाइन, राइट। बट अगर कोई आपके मेडिकल पे आता है कि बोलता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, सर बहुत दुख रहा है, मुझे दवाई दे दो, अगर आपने उसको दवाई दी या नहीं दी, मान लीजिए दी नहीं, तो कोई आपके ऊपर फाइन थोड़ी लगाने वाला है, बिकॉज इट्स अप टू यू। बट लेकिन आप होता है ना कि एक इथिक्स होता है, एक मोरल होता है, तो मोरल्स एंड इथिक्स, so there are certain ethics that pharmacist should follow. So first one is a pricing of drugs. So pricing of drugs means, you know, cost of drug or charge for drug or MRP of drug. So pricing should be, you know, pricing should be a fair, you know, fair by pharmacist. Pricing should be fair, and pharmacist should not attempt to capture a business of fellow pharmacist. तो आपने जो मेडिसिन का कॉस्ट है, प्राइस है, वो फेयर लगाना चाहिए, है ना, लीगल लगाना चाहिए, है ना। सो प्राइसिंग ऑफ ड्रग शुड बी फेयर एंड pharmacist should not capture a business of fellow pharmacist and should not, you know, capture a business of fellow pharmacist. It should calculate the price according to the given formula. रिटेल प्राइस का फॉर्मूला होता है, आजकल तो एमआरपी उसके ऊपर लिखा होता है, तो बट व्हेन देयर वाज अ डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस, एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ एपीआई, बाय एडिंग द फॉर्मुलेशन चार्जेस, बाय एडिंग द लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So pricing of drug, pricing should be fair. Pharmacist should not capture business of fellow pharmacist and should calculate the price according to the given formula, right?
should not attempt to capture the business of fellow pharmacists by cutthroat competition. So fair trade practice, fair trade practice, fair trade practice. So should not attempt to capture the business of fellow pharmacist by cutthroat competition. Cutthroat competition क्या होता है? Suppose cutthroat competition is like that, है ना. अगर आप आपके कस्टमर को कोई गिफ्ट दे रहे हो या फिर उसको आप डिस्काउंट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके प्राइसेस जो है वो कम करके दे रहे हो, रिड्यूसिंग द प्राइसेस. ओके, सो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट कम्स अंडर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ना, ए फार्मासिस्ट शुड नॉट कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बाय ऑफरिंग ए गिफ्ट्स और बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जीपैट में. तो ए फार्मासिस्ट शुड नॉट कैप्चर बिजनेस ऑफ फेलो फार्मासिस्ट बाय ऑफरिंग ए गिफ्ट्स और बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस टू द पेशेंट. ओके, ट्रेडमार्क साइंस एंड सिंबल्स, ट्रेडमार्क साइंस एंड सिंबल्स ऑफ अदर फार्मासिस्ट शुड नॉट बी कॉपीड. अगर दूसरे का ट्रेडमार्क है, उसका सिंबल्स है या फिर उसकी साइंस है, दैट शुड नॉट बी कॉपीड बाय अनदर फार्मासिस्ट. तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. नाउ परचेस ऑफ ड्रग, जो आप ड्रग बेच रहे हो कहाँ से परचेस कर रहे हो. तो परचेसिंग ऑफ ड्रग, ओके, pharmacist should purchase a standard quality of drug, should not purchase any misbranded or adulterated or spurious kind of drugs. तो आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग ही परचेस करना है और आपको मिसब्रांडेड ड्रग या फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग ये परचेस नहीं करना है. ठीक है. हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, हॉकिंग ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट द मिस मेडिकेशन एंड सेल्फ मेडिकेशन. हॉकिंग मतलब क्या है ना, बाय, है ना, जैसे आपने यहाँ पे सब्जी वाला आता है ना, टू व्हीलर के ऊपर या फिर आपका रेडी के ऊपर आता है, सब्जी ले लो, तो दैट इज नोन एज हॉकिंग. अगर उस तरीके से आप मेडिसिन लेके जा रहे हो तो दैट शुड बी ना, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड, इट शुड नॉट बी डन. तो हॉकिंग ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट द मिस medication and self administration or self medication, hawking of drug is prohibited. Advertisement, misleading and false claiming advertisement to be prohibited. जो भी एडवर्टाइजमेंट गलत क्लेम कर रहा है या फिर मिसलीड कर रहा है कस्टमर को, पेशेंट को, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड. तो advertisement misleading and false claiming advertisement should be prohibited, है ना. And pharmacist should be proportional to his work. What that is a dispensing. Pharmacist का काम क्या है? Dispensing. उसका काम diagnosis नहीं है ना. नहीं तो आपने क्या किया, B.Pharm किया, आपको लगता है अपन ही भगवान है और काउंटर के ऊपर बैठे, सामने कोई आपके यहाँ पे कस्टमर आया, वो बोला यार मेरे ना यहाँ पे गर्दन के ऊपर एक कैंसर का गांठ आ गया है. तो आप खुद से ही मेडिसिन देना नहीं चालू करना है, आप खुद से ही उसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते. राइट. ए फार्मासिस्ट विद द प्रोफेशन, ही शुड बी प्रोफेशनल टू हिज वर्क, दैट इज डिस्पेंसिंग, एंड डू नॉट कैरी एनी डायग्नोसिस. नेक्स्ट इज अ क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट. नेक्स्ट वन इज अ क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट, क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट और क्लैंडस्टीन अरेंजमेंट. सो व्हाट इज दैट? फार्मासिस्ट शुड नॉट एंटर एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट बाय ऑफरिंग एनी कमीशन or by offering any gifts or recommending his medical store. आजकल तो ये सब चल रहा है, बट लॉ में ऐसा है कि नहीं करना चाहिए, है ना. आजकल तो वही चलता है कि जहाँ डॉक्टर ही बोलता है कि हमारे मेडिकल में से ही दवा लेना है आपको, दूसरे मेडिकल वाले की दवा हम नहीं लेंगे.
So pharmacist should not enter any secret arrangement or contract with the physicians, with the doctor, by offering him a commission or by recommending offering a commission or by offering a gifts for recommending his medical store. आजकल तो ये खुलेआम चलता है और इसके सिवाय बिजनेस कर ही नहीं सकते आजकल भी कि डॉक्टर they used to take a huge commissions like 30%, 40%, even 50% they used to take commission, right? So that is known as a clandestine arrangement. Pharmacists should not enter into any secret arrangement or contract with the physician, that is by offering any commission or by offering any gifts for recommending his medical. Then liaison with the public, the relation with the public. Pharmacist should update his knowledge time to time and should educate the patient regarding the administration of drugs and possible adverse effects to ensure the compliance of drugs, not to diagnose anything, right? So pharmacist should update his knowledge time to time and should educate the patients regarding the how to use medicines, how to take drugs and their possible side effects. Second last. Now important definitions under the Drug and Cosmetic Act. First, very important definition is there, drug inspector. So drug inspector is appointed by central government or state government under the section 21 of the DNC Act. Section 21 of the Drug and Cosmetic Act, under that act, central government or state government will appoint a drug inspector to inspect the premises license for manufacturing as well as distributing as well as selling the drugs and medicines. लेक्चर चालू आहे माझं, तुम्ही तुमचं काम करा शांतीमध्ये. Drug inspector that is appointed by central government or state government under the section 21 of the Drug and Cosmetic Act, and this was again question 2-3 times in exam. तो ये ऑलरेडी 1-2 बार तो नहीं, कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके जीपैट एग्जाम में, बाकी एग्जाम में भी. So drug inspector is appointed under which section of DNC Act? So section 21 of Drug and Cosmetic Act, right? And for Ayurvedic, Siddha and Unani medicines, the drug inspector is appointed by central and state government under section 33G. Under section 33G, right? So drug inspector is appointed under section 21 of DNC Act. You have to remember this because there was already question on this. And second thing, government analyst. Government analyst is also appointed under the section 20 of Drug and Cosmetic Act. So again, central government or state government will appoint a government analyst to carry the test and analysis of samples sent by drug inspector to him. Government analyst, every FDA office has a drug inspectors, every FDA office has a government analyst, every FDA premises also has a laboratory. So government analyst is appointed under the section 20 of DNC Act by either state government or central government in relation to drug and cosmetic. In relation to Ayurvedic and Siddha and Unani medicine, so drug inspector is appointed under the section 33 of. ड्रग इंस्पेक्टर का आप कैसे अपॉइंट होता है? अंडर द सेक्शन 21 ऑफ डीएनसी एक्ट. आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के लिए अंडर सेक्शन 33G. गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन 20 of DNC, and for Ayurvedic, Unani and Siddha under the section 33 of. Now important definitions under the Drug and Cosmetic Act. So first one is a very important, that is a adulterated drug. So what do you mean by adulterated drug? What do you mean by misbranded drug? What do you mean by spurious drug?
So these kind of definitions, these kind of questions they have to ask multiple times. Spurious cosmetics, spurious drugs, adulterated drugs, misbranded drugs, right? So what do you mean by misbranded drug according to the DNC Act? So there are certain conditions. So first one is if a drug contain whole, if a drug contain whole or in a parts of filthy, putrid or decomposed substance. चालू है, लाइट चालू है, चालू है, आहे चालू सर. If drug contain whole or in a part of any filthy, filthy means any decomposed or filth मतलब गंदगी, filthy मतलब गंदा या फिर गंदगी होता है. So if drug contain whole in a part of filthy or any putrid or any decomposed substances, so that drug can be considered as a adulterated drug. तो ड्रग में पूरा ड्रग या फिर उसमें का कुछ पार्ट जिसमें फिल्ड होगा या फिर डिकम्पोज्ड सब्सटेंस होगा या फिर प्यूट्रिड होगा, तो उसको बोलेंगे अपन अडल्टरेटेड ड्रग. फर्स्ट कंडीशन, इफ ड्रग इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड, स्टोर्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन. इफ ड्रग इज प्रिपेयर्ड और पैक्ड और स्टोर्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन or may be contaminated with the filth which renders the content injurious to the health. है ना. सेकंड कंडीशन क्या है? if drug is prepared, packed or stored under unsanitary condition. Okay, नहीं, may be contaminated with the filth which renders the content injurious to the health, which render the content injurious to health. नंतर नाही करता सर आपल्याला लेक्चर फिक्चर चालू असते माझं दिवसभर, काही नसतं. पण फर्स्ट टाइमला इफ ड्रग इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन और मे बी कंटेमिनेटेड विद द फिल्थ व्हिच रेंडर्स ड्रग इंजूरियस टू द हेल्थ. थर्ड कंडीशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय अडल्टरेटेड ड्रग? इफ a container used is a composed of, container used to pack the drug is a composed of partly or wholly with poisonous or deleterious substances which render the drug injurious to the health. है ना. फोर्थ कंडीशन क्या है? if drug consists any color other than prescribed for or consist of any toxic और हार्मफुल सब्सटेंस. तो ड्रग में अगर कोई कलर जो है जो प्रेस्क्राइब नहीं किया है, दूसरा कलर यूज किया है, और ड्रग में कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? अडल्टरेटेड. इफ ए ड्रग कंसिस्टिंग इन मिक्स्ड सब्सटेंसेस, a drug consisting mixed substances or mixture so that which will reduce the quality or strength of drug, known as a adulterated drug, known as a adulterated drug, known as a adulterated. So these are the, मामा एक काम कर रहा था मैं ना, नंतर यार डिस्टर्ब होते मला. So adulterated drugs, if drug contained whole or in a part any filthy, putrid, decomposed substance. First condition. Second condition, if drug is prepared, packed, stored under unsanitary condition which may be contaminated with the filth which will render the content injurious to the health. Third condition, if container used is composed of partly or wholly by poisonous or deleterious substance which render it injurious to the health. If drug consists of a color other than prescribed for which, or a drug consists of any mixture of harmful or toxic substances. If drug consists of mixture of substances which, okay, so that the quality of drug will be reduced. So these are the conditions for drug to be called as adulterated drug.
first condition, second condition, third condition, fourth condition, and fifth condition. So they used to give you one condition. Likewise, this if drug consists of a color other than prescribed is considered as per the DNC Act. So answer will be adulterated. So remember, if drug consists of a whole or in a part of any filthy, putrid, decomposed substance, if drug is prepared, packed, or stored under unsanitary condition, or may be contaminated with the filth which renders the content injurious to the health. If container used for the packing of drug, that is partly or wholly by that is composed of partly or wholly by poisonous or deleterious substance which render it injurious to the health. Again, if drug consists of a color other than those prescribed or consists of a harmful or toxic substances. If drug consisting a mixture of substances so that to reduce the quality or the strength of drug. Next definition is very important again, misbranded drug. So what do you mean by misbranded drug as per the Drug and Cosmetic Act? So if drug is colored or coated or powdered or polished, if drug is so colored, coated, powdered or polished so that the damage is concealed, मतलब क्या कि आपका जो ड्रग का फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से कलर किया है या फिर कोट किया है उसको या फिर पाउडर किया है, पॉलिश किया है, सो दैट डैमेज इज कंसील्ड, मतलब जो डैमेज है वो छुप जाए, है ना. इफ it is colored, coated, powdered or polished so that damage is concealed, and if it is made to appear of better or greater therapeutic value, then considered as a misbranded drug. Also, if drug is not labeled in a prescribed manner, it is again misbranded drug. If labeled in such a manner that statement, design or devices मेक एनी फॉल्स क्लेम, अगर इस तरीके से लेबल किया है कि कुछ फॉल्स क्लेम मिल रहा है आपको, और ड्रग और यूज है ना, मतलब मिस ब्रांडेड ड्रग अगेन इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिस्ड so that damage is concealed, or if it is made to appear of a better or greater therapeutic value, then really it is not labeled in the prescribed manner. If labeled in such a manner that any statement, design makes any false claim for drug for use or use of false or misleading, so in that condition drug is considered as a misbranded drug. So misbranded drug, adulterated drug, very important. Misbranded drug, adulterated drug. Next definition we will see. Next definition is nothing but the spurious drug. Next definition is the spurious drug. So spurious drug means what? Again, as per the Drug and Cosmetic Act, this definition is under DNC Act. So adulterated drug, misbranded drug, and spurious drug. So if drug is imported under the name of another drug, ना, जैसे मान लीजिए आपने पैरासिटामोल इंपोर्ट किया, ओके दिव्या, ओके, if you have imported paracetamol but अंडर द नेम ऑफ एस्पिरिन, आपने आपके कंटेनर के ऊपर एस्पिरिन नाम लिखा है लेकिन अंदर नहीं पैरासिटामोल. तो इफ यू आर इंपोर्टेड ड्रग अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग which is imitation or substitute for another drug or resemble to the another drug in a manner
to hide the identity of another drug, है ना. In that case it is a spurious drug. आपने एक ड्रग दूसरे ड्रग के नाम से आपने इंपोर्ट किया, है ना. आपको एक ड्रग इंपोर्ट करना है और वो उसका नाम अलग है, लेकिन आप दूसरे ड्रग के नाम से इंपोर्ट कर रहे हो. इन दैट केस दैट बिकम अ स्पूरियस ड्रग, because that is an imitation or substitute for another drug or resembles to the another drug in a manner to hide the identity of drug to be imported. Then second condition है spurious drug का, if it bears a label or container or name of company which is actually does not exist or is a fictitious. तो अगर ड्रग के ऊपर, लेबल के ऊपर, है ना, नाम, है ना, कंटेनर के ऊपर और नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम है वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ही नहीं, है ना. अगर ड्रग के कंटेनर के ऊपर ऐसी कंपनी का नाम है जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन दैट केस इट इज अ स्पूरियस ड्रग, इट इज अ स्पूरियस ड्रग, राइट. So adulterated drug, misbranded drug, spurious drug, these are the three important definitions under the Drug and Cosmetic Act. Now under the Pharmacy Act 1948, so there are few definitions which are important. जैसे यहाँ पे लिखा है सेंट्रल रजिस्टर. Central register means what? A central register means a register of registered pharmacist maintained by Central Council, that is a PCI. A central register means a register of registered pharmacist maintained by Pharmacy Council of India under the section of 15A of Pharmacy Act 1948, है ना. Actually it is a second register. ये जो होता है सेकंड रजिस्टर होता है. फर्स्ट रजिस्टर कौन सा होता है? फर्स्ट रजिस्टर इज नथिंग बट दैट इज मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना. सेंट्रल रजिस्टर मींस रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 15A of the Pharmacy Act 1948. Now under the Magic Remedies, Drug and Magic Remedies Act. So what do you mean by magic remedies? So these are magic remedy means any talisman or mantras or kavachas or any other charm or any kind of such charm which is elevate means proposed to possess a miraculous power for diagnosis, treatment and mitigation, prevention and cure of disease or alteration of human physiology. That is known as magic remedies. So any charms like talisman, mantras, kavachas which elevate means proposed to possess a miraculous power for diagnosis, treatment, mitigation, prevention, cure disease और अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन और फिजियोलॉजी. मतलब अगर आपको कैंसर है आपको, और अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ, तावीज़ आप पहन लो, इसके बाद में कैंसर आपका क्लियर हो जाएगा, दैट इज अ मैजिक रेमेडी. बट सच काइंड ऑफ मैजिक रेमेडी डज नॉट एग्जिस्ट. तो ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको जेल होगी. Now under the Medical and Toilet Preparation Act, so another definition is there known as a dutiable goods. So medical and toilet preparation has been subject to duties of excise leviated under the act. मतलब जो भी सब्सटेंसेस है उसके ऊपर ड्यूटी लगता है. ड्यूटी मतलब क्या है? एक प्रकार का टैक्स होता है. जैसे अल्कोहल के ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविएटेड अंडर द एक्ट. कौन सा एक्ट? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट.
नाउ व्हाट डू मीन बाय डीनेचुरड स्पिरिट, इसके ऊपर भी दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, हमेशा उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। इट मीन्स अल्कोहल ऑफ एनी स्टेट, अल्कोहल ऑफ एनी स्टेट, स्टेट मतलब ये अपना महाराष्ट्र पंजाब ये नहीं, स्टेट मतलब लिक्विड और सॉलिड और वेपर्स, है ना, वो स्टेट ऑफ मैटर। डीनेचुरड स्पिरिट मीन्स अल्कोहल ऑफ एनी, है ना, सॉरी, अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ, स्टेट नहीं है स्ट्रेंथ है, अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ which is made unfit, which is made unfit for human consumption, for human consumption, alcohol of any strength which has made unfit for human consumption by addition of substance approved by central or state government। जैसे होता है कि ब्रूसिन, है ना, नक्सोमिका में आता है आपका ब्रूसिन, स्टिचनिन एंड ब्रूसिन। तो नक्सोमिका अल्कोलॉइड्स में क्या आता है, स्टिचनिन एंड ब्रूसिन। तो ब्रूसिन इज यूज्ड टू डीनेचुरेट द अल्कोहल, ब्रूसिन जो होता है इट इज यूज्ड टू डीनेचुरेट द अल्कोहल। तो व्हाट डू मीन बाय डीनेचुरेट स्पिरिट, अल्कोहल ऑफ इन स्ट्रेंथ व्हिच इज मेड unfit for human consumption by adding a substances approved by central or state government। now proof spirit, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। proof spirit means what, strength of alcohol is calculated as a proof degree, strength of alcohol is calculated as a proof degree as per the Indian standard। 100% proof means what, 100% proof means alcohol having 57.1% weight by volume। ये प्रूफ क्या होता है मालूम है क्या, इन टू चेक द quality of alcohol, quality of rum। so the soldiers was used to do one test, they used to take a gun powder, इनके पास गन तो रहता था, they used to take a gun powder means बारूद, and they used to pour few ml of alcohol on that, जैसे आपका रम है, and they used to ignite। if whole alcohol gets burned, that is known as 100% proof। so proof spirit means strength of alcohol is calculated as a proof degrees as per the Indian standard। 100% proof spirit means 57% volume by volume or 57.1% weight by weight। now next is a bonded laboratory under the this chapter same under the Medicinal and Toilet Preparation Act 1955। bonded laboratory, so bonded laboratory मतलब क्या होता है, the premises license for manufacturing and storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, Indian hemp, narcotic drugs and other products on which duty has not been paid। इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। सो बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब क्या है कि इट इज अ प्लेस और प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन containing alcohol or any narcotic drug like Indian hemp, narcotic drugs and other products on which duty has not been paid। तो बॉन्डेड लायबिलिटी मतलब क्या है कि अल्कोहल का जो टैक्स है वो दिया नहीं है, और जो है ना एक्साइज ऑफिसर होते हैं उनके अंडर उनके सुपरविजन में ही आपको आपका प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। दैट इज अ बॉन्डेड लायबिलिटी। नॉन बॉन्डेड लायबिलिटी मतलब क्या है, सेम थिंग on which duty has been paid। so again same premises license for the manufacturing storage of medicine and toilet preparation containing alcohol, Indian hemp or narcotic drug on which duty has already paid। एक बार टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट को क्या करना है, आप वो अल्कोहल यूज कर रहे हो तो फेंक के दे रहे हो। तो इन द केस ऑफ बॉन्डेड लायबिलिटी दे विल अपॉइंट ए एक्साइज ऑफिसर, है ना,
And in case of non-bonded liability, no need to appoint any excise officer because you have already paid the duty tax. Now, under the narcotic drug and psychotropic substance, so definitions are like illicit traffic. Illicit traffic. What do you mean by illicit traffic? So it includes the cultivation and gathering. इसमें क्या है कि cultivation and gathering of any part of coca, opium plant, है ना. अगर आप कोका या फिर ओपियम का कल्टीवेशन कर रहे हो या फिर उसको जमा करके रखा है, और engaging in the production or manufacturing, sale or purchase, supply, distribution, transportation, import, export of narcotic drug and psychotropic substances known as illicit traffic, or financing of any above activities. अगर उसको फाइनेंस भी किया तो हैंडलिंग और लेटिंग यूज योर प्रीमाइसेस फॉर द कैरिंग एनी वन ऑफ द अबव एक्टिविटीज, है ना. मतलब ये एक्टिविटी आपने नहीं की लेकिन आपका प्लेस यूज हुआ है ना. ये एक्टिविटी आपने नहीं की है लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो यू ऑल्सो कम्स अंडर इलिसिट ट्रैफिक. सो cultivation, gathering of any part of coca plant or opium plant, engaging in production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of narcotic drug and psychotropic substance, financing of the above, or handling or letting use your premises for the same, that is illicit traffic. Now cannabis मतलब क्या? Cannabis means includes two things. First one is charas, second one is ganja, and mixture of any above. So cannabis means charas. Charas is nothing but the crude and purified resin. Charas क्या है? It is a crude and purified resin obtained from cannabis plant, including the concentrated preparations like preparation. Resin is known as hashish oil और liquid hashish. कैनाबिस के अंदर चरस आता है, सेकंड आता है गांजा. गांजा मतलब क्या? फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ कैनाबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग सीड्स एंड लीव्स. थर्ड थिंग क्या आता है? एनी मिक्सचर ऑफ अबव मटेरियल इन एनी फॉर्म और ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम. तो आपका जो भांग पीने का जो है वो भी आता है इसमें. इन कोका डेरिवेटिव्स. कोका डेरिवेटिव मतलब क्या? क्रूड कोकेन और इकोनेन और इट्स डेरिवेटिव containing methyl ester of benzyl iconin and all preparation containing more than 0.1% cocaine, that is known as coca derivative. अभी जो DPCO एक्ट होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसमें कुछ डेफिनेशन जैसे सीलिंग प्राइस. तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है. फिक्स प्राइस इज fixed by government time to time for the scheduled formulation in accordance with the paragraph G of DPCO Act. गवर्नमेंट क्या करता है? शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन जो है उनके प्राइसेस फिक्स करता है. प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर अ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन इज नोन एज अ सीलिंग प्राइस. Under that DPCO only free reserve is also there. So it is a reserve created by appropriation of profit, but shall not be include reserve provided for consignment and a contingent liability, dispute claim, and goodwill, and includes the free reserve. Pre-tax return, profit before payment of income tax and surtax, which includes the other expenses which will not form a part of cost of formulation. लैंडेड कॉस्ट के बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. लैंडेड कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडेड कॉस्ट? इज अ मीन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ अ फॉर्मुलेशन इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस. लैंडेड कॉस्ट और लैंडेड कॉस्ट मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ एनी फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग इट्स कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस एट अ पोर्ट, हो गया आपका लैंडिंग कॉस्ट. नेक्स्ट है आपका रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग. रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग, yes, रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग. यस दिव्या कुमारी, करेक्ट है. रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग
Under DPCO Act, retail price of drug is calculated by using the formula. Now, fixed prices of scheduled formulation by government under the provisions of DPCO. Fixed price for scheduled formulation by the government under the provisions of DPCO Act. Retail price for drug formulation can be calculated by using. पहले ये रिटेल प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता था, अभी तो आजकल ये MRP है डायरेक्टली. तो रिटेल प्राइस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, लास्ट ईयर भी आया था. तो रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग इज कैलकुलेटेड एज पर द DPCO एक्ट. रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर फॉर्मुलेशन, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन. आजकल तो अभी रेडीमेड प्रोडक्शन होता है, रेडीमेड सब कुछ है आपका, आपको सिर्फ डिस्पेंस करना है, मतलब बॉक्स में से निकाल के अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन आपको वो देना है. लेकिन पहले ज़माने में क्या था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद में वो API ढूंढेगा, API ढूंढने के बाद में फॉर्मुलेशन बनाएगा, फॉर्मुलेशन बनाने के बाद में उसको कंटेनर में उसको पैक करेगा और बाद में वो डिस्पेंस करेगा. तो उस टाइम पे उसको ये कैलकुलेट करना पड़ता था कि व्हाट इज द रिटेल प्राइस ऑफ दिस. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC. याद रखो ऐसे ही MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC, एक दो बार उसको रट लो हो जाएगा. MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE, 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस ED. MC क्या है, MC मतलब मटेरियल कॉस्ट, MC मतलब क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट. CC मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, PC मतलब पैकेजिंग चार्जेस, PM मतलब पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, ED मतलब एक्साइज ड्यूटी. अभी MAPE क्या है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है ये फॉर्मूले के ऊपर. और उस फॉर्मूले में MAPE क्या है, इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन. व्हाट इज MAPE? इट इज अ मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस. मैक्सिमम अलाउएबल post marketing expenses should not exceed, the MAPE should not exceed कितना, 75% for category 1 drug, category 1 drug which are used in a national health program. नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो ड्रग यूज होते हैं उसको कैटेगरी 1 बोलते हैं. और इसमें ये मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस है ना 75%. These are 100% for category second drug. These are 100% for category second drug. तभी जाके जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है उसके टीबी के दवाइयाँ इतनी महंगी है लेकिन सस्ती मिलती है. क्यों? कि उसमें पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम होते, प्रॉफिट कम होता. तो बी में देखो 100% कैटेगरी बी कौन सा है, These are the drug other than the category 1. Display of price under the DPCO Act. For schedule formulation, आपको क्या डिस्प्ले करना है, रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड, डबल इन्वर्टेड कॉमन. पहले उसके बाद में लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा. फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन रिटेल प्राइस टू बी एक्सीड प्रीसीडिंग इट एंड लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा सब्सिडिंग इट. फॉर नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस. For non-scheduled formulation, maximum retail price including all taxes ये होता है. Now important points from different acts, जैसे DNC एक्ट में है आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, इनके काम क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके बारे में. गवर्नमेंट एनालिस्ट which is appointed by state or central government under the section 20 of the DNC Act. Section 20 याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं इसके ऊपर भी, TI के ऊपर भी. What is the functions of government analyst? So to analyze the sample sent by a drug inspector or other person and to furnish the result, to send the result of test of analysis according to the procedure. And on arrival, एक बार sample आया ना, on arrival analyst will receive the sample which is sent by DI
and check the seal on a package properly. After analysis, will supply a report of analysis COA in triplicate. In a triplicate, यहाँ पे याद रखना है, in a triplicate 3 कॉपी में एनालिसिस होने के बाद में जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट विल गिव सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इन अ ट्रिप्लीकेट 3 कॉपीज में, ठीक है, याद रखना है, इन द फॉर्म 30, इन द फॉर्म 30. गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया ड्रग अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 21 ऑफ DNCA by state or central government. So what is the role? To inspect the premises which are licensed for drug and cosmetic, which are licensed for drug and cosmetic manufacturing or testing or stock. To inspect the any premises where drug and cosmetic B is being manufactured or tested or being stocked or being distributed or being exhibited to sale. To take the samples of any drug or cosmetic, and drug inspector can stop and search any vehicle or any conveyance for the carrying drugs and cosmetic in reference to which offenses has been committed or being committed. मतलब है ना, मतलब कुछ गलत किया है, ऐसा कुछ व्हीकल है या फिर जो भी मीन ऑफ कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टेशन का मीन है, उसको भी सीज कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, सर्च कर सकता है, इस जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक होंगे जहां पे गुनाह हो चुका है या फिर होने वाला है ऐसा. नाउ एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर. ड्रग इंस्पेक्टर है ना, क्या रोल है इसका, क्या फंक्शन है? टू इंस्पेक्ट द एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. टू इंस्पेक्ट द एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर all premises licensed for sale of drug and cosmetic, and to investigate the complaints made him in writing. अगर किसी ने आपके मेडिकल के ऊपर कंप्लेंट डाल दिया कि DI को लेटर लिख दिया इसके यहाँ पे इलीगल अबॉर्शन के दवाई मिलता है, तो वो आ जाएगा आपको कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करने की ना. ही विल इंस्पेक्ट एटलीस्ट 2 times a year all the premises, all the medical shop licensed for sale of drug and cosmetic. Also, you will inspect at least 2 times all the premises where drug is being manufactured or cosmetic is being manufactured, and will ensure the conditions for manufacturing is being observed. GMP observe हो रहा है, GMP compliance हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी observe करेगा. Narcotic Commissioner under the Narcotic Act. Narcotic Commissioner is appointed under the Narcotic and Psychotropic Drug Act, NDPS Act. Central government appoints the Narcotic Commissioner to supervise the cultivation of इसका opium poppy and production of opium, to give the effect to the provisions of the law. है ना, जो लॉ के प्रोविजंस है वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, इसके लिए भी एक state government can also appoint the commissioner for their territory. Now places through which drug can be imported into India. कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आता है आपको कि आप बाय रेलवे कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, बाय सी कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, बाय एयर कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो. Places through which drug may be imported into India. Places through which drug is imported into India. So drug can be imported by railways at a Firozpur cantonment. Firozpur cantonment. Firozpur cantonment area में या फिर अमृतसर रेलवे स्टेशन. अमृतसर रेलवे स्टेशन. So if drug is being imported from Pakistan, that is imported at a Amritsar railway station. If drug is being imported by sea route, then
इट इज इम्पोर्टेड मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, कोचीन और विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ पे जो पोर्ट है मद्रास के, कलकत्ता में, बॉम्बे में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में जो पोर्ट है वहाँ पे ये वहाँ से ही इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी और जगह से इंपोर्ट नहीं कर सकते। बाय एयर, ड्रग इज इम्पोर्टेड बाय एयर एट मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद। क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया। कौन से ड्रग आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते? क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया। यू कैन नॉट इम्पोर्ट एनी अडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, है ना, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन whose formula has not been disclosed, है ना, also drug which are claiming to cure schedule J diseases, or drug without any therapeutic value, or drug injurious to the animal। तो ये टाइप के ड्रग आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। Such kind of drugs is not allowed to import in India। Of import license, import license is valid for 3 years। Import license is valid for 3 years। Duration of import license is valid for 3 years। If it is suspended, then you have to apply freshly। Loan license is valid for 5 years। Question already आ चुका है। Retail license to sell the drug is valid up to the 31st December of year। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। And it should be renewed within 6 months of the expiry date। Schedule W, Schedule W मतलब क्या होता है? Generic drug that are marketed under the generic names only। List of drug which are marketed under the name of under the generic name only। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनाल्जिन, तो अनाल्जिन क्या है? इट इज अ NSAID। एस्पिरिन मतलब एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सॉल्ट। फेरस सल्फेट एंड इट्स सॉल्ट, फेरस सल्फेट और फेरस सॉल्ट्स। पिप्रेजिन एंड इट्स सॉल्ट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आता है? लिस्ट ऑफ ड्रग व्हिच आर मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। एग्जांपल क्या रहेगा? एनाल्जिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड सॉल्ट, क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सॉल्ट्स, फेरस सॉल्ट्स, पिप्रेजिन एंड इट्स सॉल्ट्स। शेड्यूल वाई क्या होता है? आपको मालूम है अच्छी तरह से। शेड्यूल वाई इज नथिंग बट द provisions related to clinical trials। It is a provisions related with the clinical trials, and in that if you are using a human subject, अगर आपको human subject यूज कर रहे हो clinical trial, मतलब clinical trial में human subject ही यूज करते हैं ना, तो you are using a human subject over here, so you have to obtain a consent form। So written informed consent should be obtained from every subject participating in every clinical trial। The consent form should be authorized by ethical committee। याद रखना है कंसेंट फॉर्म लगता है, ऐसा कोई किसी को भी आप उठा के सब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसका कंसेंट फॉर्म लगता है। मतलब अगर मैं मर गया तो जिम्मेदारी किसकी है ना? जिम्मेदारी तुम्हारी, ऐसा कंसेंट फॉर्म है ना। रिमेनिंग पॉइंट्स विल टेक टुमारो, रिमेनिंग पॉइंट्स विल टेक टुमारो। और भी बहुत सारा है, कल मेंबर्स देखेंगे, अदरवाइज विल टेक। चलो कल की बजाय आज ये देख लेते हैं ये क्या है।
फटाफट कंप्लीट भी तो करना है ना. सो मेंबर्स ऑफ DTAB. सो व्हाट इज मीन बाय DTAB? DTAB मतलब क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. तो द बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोर्ड? बोर्ड का काम क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके नाम में रखा है. टू एडवाइज द गवर्नमेंट, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अ टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड ड्रग, है ना. ऑन अ टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड ड्रग DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड. नाउ मेंबर्स ऑफ DTAB कितना है? टोटल 18. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. मेंबर्स ऑफ DTAB कितने इलेक्टेड है, कितने नॉमिनेटेड है, कितने एक्स ऑफिशियल है. चलो अब देख लेते हैं. देयर आर टोटल 18 मेंबर्स अंडर DTAB. तो फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स, पहले कौन से देखेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स. तो वन टीचर फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड इज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI. PCI में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो एक टीचर को इलेक्ट करते हैं अमॉन्ग्स द टीचर्स ऑफ फार्मेसी. में एक इलेक्शन होगा, वो उसका एक इलेक्ट होकर वहां पे जाएगा. वन टीचर इज आल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द मेडिसिन और मेडिसिन एंड इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. वन टीचर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेडिसिन और थेरेपेटिक्स इलेक्टेड बाय मेडिसिनल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. थर्ड होता है वन फार्माकोलॉजिस्ट इज इलेक्टेड बाय ICMR. One person is elected by Council of CMI. One council is elected by, one person is elected by IP, Indian Pharmaceutical Association. ना, तो ये इलेक्टेड कौन सा है? देखो, वन फ्रॉम फार्मेसी, वन फ्रॉम मेडिसिन, वन फ्रॉम ICMR, वन फ्रॉम CMA, वन फ्रॉम IP. नाउ नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेशन किसको मिलता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो 2 persons they are nominated by the state government from the, है ना, from in-charge of DCO in a state. ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो होता है स्टेट की, उसमें से 1 person is nominated by the central government from the pharma industry, and again 2 government analysts nominated by central government. देखो इलेक्टेड मेंबर कितने? इलेक्टेड मेंबर्स है 5. So there are 5 elected members, है ना. Then nominated members are again 5. Okay. Then ex officio members. तो पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, which is also chairman of DTAB. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज आल्सो चेयरमैन ऑफ DTAB. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. सेकंड एक्स ऑफिशियल आता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, DCO. देन थर्ड होता है आपका डायरेक्टर CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, डायरेक्टर CRI कसौली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, डायरेक्टर IVRI इज्जत नगर, है ना, वेटरनरी का जो लाइब्रेरी, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर. देन प्रेसिडेंट PCI एक होता है, प्रेसिडेंट MCI एक होता है, डायरेक्टर CDRL लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लाइब्रेरी लखनऊ. तो देर आर 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, है ना. तो 5 + 5 10 and +8 18. तो याद रखना है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 5. DTAB, 1 टीचर फ्रॉम फार्मेसी प्रोफेशन इज इलेक्टेड, 1 टीचर फ्रॉम मेडिसिन इज इलेक्टेड बाय MCI, है ना, 1 टीचर फ्रॉम फार्मेसी इज इलेक्टेड बाय PCI, 1 टीचर फ्रॉम मेडिसिन इज elected by MCI, 1 pharmacologist is elected by ICMR, 1 person from Council of CMA, Complementary Medicine of India, 1 person from Indian Pharmaceutical Association, 2 persons are nominated by central government, which are in charge of DCO in state, 1 person nominated by government from pharma industry,
वन गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्स ऑफिशियो में क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच आल्सो चेयरमैन, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर CDL कोलकाता, डायरेक्टर CRI कसौली, डायरेक्टर IVRI इज्जतनगर, प्रेसिडेंट PCI, प्रेसिडेंट MCI एंड डायरेक्टर CDRL लखनऊ. तो एक्स ऑफिशियो मेंबर याद कैसे रखना है, यहाँ पे सब है ना डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट मतलब बड़े लोग होंगे. एक्स ऑफिशियो मेंबर कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे ओनली बड़े लोग होंगे, जैसे डायरेक्टर और प्रेसिडेंट, ये बड़े लोग होते हैं ना. नाउ मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. इसके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है ना, कितने इलेक्ट होते हैं, कितने नॉमिनेट होते हैं. तो अगेन देयर आर टोटल 19 मेंबर्स इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो पहले अपन देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन करके आते हैं, है ना. नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब क्या, जिनका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ नाम दिए जाते हैं, नॉमिनेशन होता है इनका. एक्स ऑफिशियो मेंबर तो ये ऑलरेडी ये रहेंगे मेंबर. 6 members which are elected amongst the 6 members are elected amongst which at least one should be teacher from subject. ये 6 members जो elect होते हैं उसमें एक टीचर चाहिए from the subject like a pharmacy or pharmaceutical chemistry or pharmacology, pharmacognosy, that is elected by University Grant Commission amongst the teacher of Indian University or affiliated college imparting diploma or degree in the pharmacy. ये जो 6 मेंबर्स है उसमें के बाकी मेंबर्स फ्रॉम द फार्मासिस्ट आते हैं ना, फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसमें से आते. नाउ वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम द अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ मेडिसिनल काउंसिल ऑफ इंडिया. मेडिसिनल काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने मेंबर है उनमें एक इलेक्शन होकर एक मेंबर आता है फार्मेसी काउंसिल में. One member is elected by each state pharmacy council and should be pharmacist. तो every state का pharmacy council जो है उसमें का एक member PCI में होता है. वैसे total elected members are 6. Total elected members are 8. 6 members from the, है ना, 6 members are elected. जब उसमें का एक टीचर होता है, बाकी सब pharmacist होते हैं. And 1 member from Medical Council of India. 1 member elected from the state council. Total 8 elected members. Now nominated members, 6 members are nominated by Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Out of 4 should possess degree or diploma in pharmacy and should be practicing the pharmacy or pharmaceutical industry. Then 1 representative of UGC and AIIMS. 1 member of each state government who should be registered pharmacist nominated by respective government or union trade. तो टोटल नॉमिनेटेड कितने होते, एक तो 8 हो सकते हैं या फिर 9 हो सकते. एक्स ऑफिशियो कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव. एक तो वो खुद आ सकता है या तो उनका नॉमिनी आ सकता है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनेटेड मेंबर. डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता. एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होंगे, 3. तो इलेक्टेड मेंबर्स आर 8, nominated are also 8, sometimes 9. Then ex officio are 3. These are the members of Pharmacy Council of India. Remaining part we'll see tomorrow.